of the good old days. Today's panel consists of some of the most expert media people available in Gujarat. Let's welcome them on stage. Mr. Ajay Umat, Ms. Anurita Rathod, Mr. Brajesh Kumar Singh, Kiran Mandral, Mr. Tuhin Sinha, and our moderator for the session, Mr. Pradeep Malik. Please welcome the dignitaries with a huge round of applause. Hello. Do it without the talk. Mr. Ajay Umat is a leading senior journalist of Gujarat, having served in the field for 28 years. He has worked with several major newspapers of the country and is currently the editor of Nav Gujarat Samay. He is also a dynamic writer and orator. Also known as a prolific columnist, he pens down Nukte Chini and Point of Order in Nav Gujarat Samay. Mr. Umat has been felicitated with a vast number of awards throughout his career. Ms. Anurita Rathod is a senior journalist and a media professional with an experience that spans 2 decades. Along with her flair for writing, she has been pioneering several creative initiatives in arts, literature, and lifestyle. To her credit, she conceived and organized Gujarat's first ever art show and charity auction in 2014. Anurita has been in senior editorial positions with the Indian Express and Ahmedabad Mirror, and has also had a notable stint in FM radio. Dr. Brajesh Kumar Singh is the executive editor of ABP Asmita, the Gujarati news channel of the ABP News Network. He has been leading the Gujarat news operations of the ABP News since last 13 years. Mr. Singh has also been associated with the Gujarat news operations of Zee Network and Aaj. Having done a PhD in mass communication, he has been serving the sector for over 2 decades. Ms. Kiran Mandral is a noted author, blogger and journalist. She was among the top bloggers in India before she moved on to writing fiction. Ms. Mandral is best known for her works Calming Kids, All Aboard, Once Upon a Crush and The Reluctant Detective. Her work spans over several genres and all of them have been bestsellers. She currently resides in Mumbai, battling a serious Nutella addiction. Mr. Tuhin Sinha is a novelist known for his works of Love and Politics, The Edge of Power and 22 Yards. Daddy is his non-fiction narrative. Being a keen political observer, his columns on Indian politics appear regularly in leading dailies. He has also scripted several popular TV shows like Ye Rishta Kya Kehlata Hai on Star Plus. The session will be moderated by Dr. Pradeep Malik, a communication teacher with more than 25 years of experience in print, broadcast and new media. Dr. Malik has been associated with leading media houses like the Times of India, Business India Group, India Abroad Group and the Basel Corporation. His most recent affiliation was with print media as he gave his expert service at Ahmedabad Mirror as its deputy resident editor. Currently, Dr. Malik is an adjunct professor of communication at School of Liberal Studies, Pandit Deendayal Petroleum University. He has authored 3 books and has been a proactive contributor at national and international paper presentations. So,
in spicing up stories, is there a threat of actual news being lost in sensationalization? Do correct news and original content suffer in such cases? Let us find out. Am I audible? Yeah. I hope I'm audible now. Yes. I can hear myself. Great. Our host for the day gave an introduction to all the panelists. Welcome, all of you. And I have a tough task of having on my panel the curator herself. And this session should have ended about 20 minutes ago. So we are kind of, we have to go back in the past. Or rather, we are already in the future. Let's see. We are caught in two strands. I'm strictly getting into the topic. We are caught in two strands. First is in this news narrative. The old word term for it is journalism. So news narrative is a recent term. Anyway, so as journalism, we are caught in two strands. First strand is the one which believes in that old world ethics, old world charm, old world practices, and that is, it has certain obligations. Obligations to truth, obligations to citizens, obligations to cross, check, and verify before you write. That's the first. Okay? And when they do this, and we have quite a few of them with us on our panel today, they become, as they say, the first drafter of history. I don't know, history has its own interpretation, people think about history in different manners, but that is one point. And the second strand is what has been attributed to the poet and critic of the 19th century, poet and critic, Matthew Arnold, who said, journalism is literature in a hurry. We are not very sure whether it was indeed Matthew Arnold who said this. But because there is no recorded evidence of he saying it, it has been attributed to him. So these are the two strands. In between we are caught. What's happening around us? You know, the print is already into its sunset. Radio never really was allowed to come out of from under the protective wings of the state. Television is already facing the heat thanks to the social media, the increased activities on social media. And in this perspective, they have to retain their readership, they have to retain their viewership. You know, print is trying to make its sunset a little golden, a little glorious. And television has to retain its GRP, the viewership. So this is where we are. We are situated between the two extremes. Let's see how it unfolds. So what happens because of that? Because of the need for TRP or the need for making this sunset a little golden in hue. What we call narratives and the narration has been sensationalized. Well, I have my own viewpoint, but that is not important today. What is important is my panelists' viewpoint. So we'll begin with the hardcore journalists. We'll begin with Ajay Bhai. Ajay, your viewpoint, sir. Oh, will. No. Let us, okay, fine. Brajesh Bhai, I'll request Brajesh Bhai to begin his discussion. Audience, I would Dr. Brajesh Singh, my fellow colleague, fellow worker. We are incidentally, all three of us have been with Gujarat Media Club, all three of us in succession.
have been the presidents. We have the presidents in succession. Anyway, so I would like the audience to hold back their questions towards the end. We are open. May I ask the curator, can you be open to all languages, Hindi, English? I don't think anybody speaks, Gujarati, yes, of course. So Hindi, English, Gujarati, that's the flavor of the day today. You know, since morning we had such a wonderful rendition of Lok Dialogue in Gujarati. So we'll be open to all languages. Brajesh bhai, क्या हम लोग शुरू कर सकते? धन्यवाद ब्रज भाई। चूँकि जब भी ये बात होती है सेंसिटाइजेशन की या फिर फिक्शनलाइजेशन की, जो मीडिया के अंदर जो हिस्सा सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है वो हम लोग होते हैं, जो टेलीविज़न। इसलिए हम लोग कह रहे हैं क्योंकि 20 साल में मैंने 19 साल टेलीविज़न में निकाला, तो कोई चारा है नहीं। चूँकि लिटरेचर फेस्टिवल है, 2 राइडर मैं लगा देता हूँ कि आज तक मैंने न तो कोई कविता लिखी है, न कोई कहानी लिखी है, और न ही मेरी कोई किताब पब्लिश। एक PhD की भी आज भी पब्लिश है। सेंसेशनलिज्म, आप लोगों को ध्यान होगा, जिस ऑर्गेनाइजेशन को मैं बिलोंग करता हूँ, ABP न्यूज़, बहुत पहले करीब 4 साल पहले हमने एक सीरीज शुरू की थी, प्रधानमंत्री। शायद बहुत लोगों के लिए मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का रेफरेंस भी रहा हो। टेलीवाइज किया था हमने 47 ऑनवर्ड्स की जर्नी को। उसका जो दूसरा एपिसोड था, जो कि हम इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स की बात कर रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले मधुर इमरजेंसी पे बोल के गए आपातकाल। हम में से ज़्यादातर लोग गुजरात के हैं, तो जूनागढ़ की हिस्ट्री से परिचित होंगे। ये भी हमें पता होगा कि 47 के अक्टूबर महीने में शायद 25 तारीख थी, जब नवाब महमूद खान थर्ड, जिन्होंने कि 15 अगस्त 1947 के दिन अपनी रियासत को पाकिस्तान के साथ जोड़ना अनाउंस किया था। फाइनली जो आज की हुकूमत का जो मूवमेंट था, उससे छोड़कर जो प्रेशर आया वो पाकिस्तान था। जो सेकंड एपिसोड था हमने उस पर किया था, और चूँकि उस प्रोसेस से मैं जुड़ा था जब वो फाइनली टेलीकास्ट हुआ, और मुझे ध्यान है शेखर कपूर, आप लोगों को भी अगर ध्यान हो, उसको एंकर कर रहे थे। उसमें दिखाया गया था कि नवाब को नाटक का बहुत शौक, जो ट्रुथ भी थी, लेकिन नवाब के पाँव में घुंघरू बंधे हुए थे और वो नाच रहा था। जो नरेशन करते हैं शायद उसमें सत्यता थोड़ी सी कम है। नवाब को शौक था, वह खुद प्ले में हिस्सा लेता था, बट वो प्राइवेट ऑडियंस होती थी। दूसरा एक उसमें सीन था कि जब नवाब भाग रहा था, तो अपने पैलेस से ज्वेलरीज भी जो है वो खुद बॉक्स में भर के और भाग रहा था। मैंने बड़ा सीरियस ऑब्जेक्शन लिया। मैंने कहा कि नवाब के पास सैकड़ों की तादाद में नौकर थे। सौराष्ट्र में जिन हम 222 रियासतों की हिस्ट्री जो पढ़ते हैं, उसमें से सबसे बड़ी रियासत जूनागढ़ की, और उसके नवाब को जाहिर है अपने हाथ से कुछ भरने की जरूरत नहीं थी। जो फिक्शनलाइज करने की बात हम लोग कहते हैं कि न्यूज़ नरेशन में आता है। कई बार जो नरेशन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम करते हैं, शायद जो एक कॉमन व्यूअर हो, अगर हम उसको बहुत सादगी से अगर ये बात बताते हैं, उसको शायद उसको उतना मज़ा नहीं आता जितना कि उस थोड़ी सी ड्रामेटाइजेशन की वजह से उसके दिमाग में रजिस्टर हुआ हो। तो यह लिबर्टी कभी कभार हम न्यूज़ में तो लेते ही हैं। जाहिर है जो बॉलीवुड है, अभी जिसकी आपातकाल की बात कर रहे थे, शायद अगली उनकी मूवी है इस पर, मधुर की, अगर वो एक रिजनेबल प्रोपोर्शन हो, उसमें कतई कोई बुराई नहीं है। क्योंकि आप देखें न्यूज़ लोगों को अगर वो उनके लिए इंटरेस्टिंग ना हो, तो उसको कंज्यूम करना भी बड़ा मुश्किल होगा। अगर आप सिर्फ एक फैक्ट चेक बनाकर अखबार को या फिर टेलीविज़न को छोड़ दें, बहुत मुश्किल होगा उसको बर्दाश्त करना। जो एक परसेप्शन बनता है, जैसे कि अभी ध्वनित से जब बात हो रही थी और मधुर ने जिसका खंडन किया कि भाई अभी बहुत छिछोरा हो गया है बॉलीवुड, ऐसा नहीं है। वैसा ही टेलीविज़न के बारे में मैं कह सकता हूँ कि मान लीजिए प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक अनाउंसमेंट थी कि भाई 500 और 1000 के नोट बंद किए जा रहे हैं, और उसके बाद से अगर ATM काउंटर्स पर या फिर बैंक्स के आगे अगर हज़ारों की लाइन है और अगर हम उसको नैरेट कर रहे हैं खूबसूरत ढंग से, उसमें कतई कोई बुराई नहीं। लेकिन उसका दूसरा एक्सट्रीम है, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि हम ऐसा नहीं कर रहे। शीना बोरा का केस आपके सामने है, निठारी किलिंग्स है हमारे सामने। प्रेशर है, ज़रूर प्रेशर है, TRPs का प्रेशर है, लीडरशिप का प्रेशर है, लेकिन एक फाइन बैलेंस बनाकर रखने की ज़रूरत है। और सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है जितनी कि कई बार हमको लगता है। मुझे लगता है कि इसके बाद जो है आगे फिर हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। आगे चर्चा करते हैं।
Ajay bhai, can we have आपके views on this? डेफिनेटली प्रदीप मलिक, जब आप बता रहे थे कि जर्नलिज्म इज ए फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ हिस्ट्री, और यू ऑल्सो सेड दैट मैथ्यू आर्नोल्ड को कोट करते हुए आपने कहा कि भाई वो तो इट्स ए लिटरेचर रिटन इन हरी. Somebody was asking me, what is the difference between journalism and literature? The problem today is that literature nobody reads and journalism is not worth reading. When I was a student of journalism, we were taught, what is the definition of news. So my teacher would tell me, that if dog bites a man, it is not a news, because वो कुत्ते की फितरत है कि वो आदमी को काटेगा. But if man bites a dog, then it is a news. Huh? Now these days, when I go to teach EMRC or to I'm in Center for Development Communication or to MICA or to other institute, I teach my students that if dog bites a man, it is not a news. If men bite dog, that is also not a news. But if men bite dogs and if dog catches AIDS, then it is a news. After Modi has become Prime Minister, government employees are attending office on time. That has also become news. And if you find a politician to collect a 500 or 1000 rupee note in queue, that is also a news. है ना? कल राहुल गांधी की खबर इसलिए बनी क्योंकि राहुल गांधी क्यू में खड़ा था, बराबर है. And in the era of social media, if Donald Trump wins election, that has also become news. The reason is that the point I am raising is that it's a question of credibility. Indian media had virtually written off Narendra Modi at one point of time. In 2002, you must have seen that Modi was a winner. And all the big English media news channel, ब्रिजेश हमको मालूम है, वो मोदी का फोटो एस डायमंड छापते थे. आज मोदी हीरो है, बराबर है. द रीजन इज कि एक जो डिवाइड जो सोसाइटी में हुई थी वो विजिबल है. उसी तरह एक डिजिटल डिवाइड भी सोसाइटी में है. जिसको रूपर्ट मुर्डॉक ने कहा है that जैसे रघुवीर चौधरी साहब यहाँ उपस्थित, मैं रघुवीर चौधरी साहब, वी बिलोंग टू डिजिटली इमिग्रेंट पीपल. क्योंकि हम लोग जब पैदा हुए थे तब न टेलीप्रिंटर थे न टेलेक्स मशीन थे. मलिक को याद है कि हमारी ऑफिस में जब फैक्स आता था तो बॉम्बे से कोई क्रिकेट मैच होती थी तो सीनियर एडिटर्स अपने साथ वो फैक्स मशीन लेके आते थे ताकि वो फोटो जो है वो उसमें जाए. दिस आई एम टॉकिंग टू यू इन द ईरा ऑफ 1990s, बराबर है. हम जब पैदा हुए तब आईफोन और आईपैड नहीं थे, है ना. तब टेलीप्रिंटर पे भी न्यूज नहीं आते थे, बराबर. वो जमाने की बात और आज की जो जनरेशन है जो आईपैड और आईफोन के साथ पैदा हुई है. सो देयर इज अ डिजिटल डिवाइड बिटवीन डिजिटली इमिग्रेंट एंड digitally native people. So the biggest challenge before an editor is to have a bridge between digitally native and this digitally immigrant people. And that is the reason that I find there is this new generation. हमारे जमाने में प्रिंट मीडिया में जो लिखा है वो सही है, वो काला अक्षर फैस बराबर है, फिर भी सही है. आज की जनरेशन जो है जो सोशल मीडिया देखती है वो हमारे न्यूज़ को नहीं मानती है. इसीलिए दैट इज द रीजन कि न्यूज़पेपर जो है उसमें क्रेडिबिलिटी क्राइसिस है. एक जमाने में कहा जाता था कि भाई मीडिया परसेप्शन जो डेवलप कर देता है उसके हिसाब से पॉलिटिशियन चुना जाता है. बट द यंग बॉयज एंड गर्ल्स इन अमेरिका हैव प्रूव्ड कि अगर आप 75 इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फ्यू बंच ऑफ मीडिया ओनर्स विल डिसाइड दैट हिलरी क्लिंटन विल विन, दिस वुड नॉट हैपन. All those lobbyists in America have failed because of this young audience, because this young audience has decided कि ये होना चाहिए. Same thing has happened in Britain. Brexit, senior citizens were in favor कि ब्रिटेन जो है वो यूरोप के साथ रहना चाहिए, youth were opposing it, and you have seen what has happened. So, sorry, it was other way around. But the point I am making that this digital divide और जो society में भी divide चल रही है, and this is not true in case of India also. I would just tell you one more reason. Woodrow Wilson became president. Yogi is sitting here in the year 1916, and Chomsky has written a very nice thesis. Chomsky has said that when he became president, his slogan was that victory with peace. The society in America was very, very pessimistic. They never wanted to go for World War I. But Woodrow Wilson wanted to go for war. And that was the reason, he had appointed a Creel Commission. And that Creel Commission
had turned that pacifistic society in a very historical society. एंड 6 महीने के अंदर उन्होंने अमेरिका के सब, चाहे वो लिटरेरी फिगर हो, कॉलम राइटर हो, फिल्म मेकर हो, सबको ये कहा कि वी नीड टू गो फॉर वॉर, एंड दे हैड वर्चुअली मैन्युफैक्चर्ड द कंसेंट. और वो कंसेंट इस तरह से मैन्युफैक्चर हुई दैट यू आफ्टर 6 months द पैसिफिस्टिक सोसाइटी ऑफ अमेरिका had become hysterical and they wanted to tear German from limb to limb. They wanted to tear everything, whatever German made, and that is how they had gone for war. The point I am making is that today in social media, because of social media, I don't know who is controlling this media. Sometimes you will find those manufactured messages which may not be true, and the basic concept of democracy is that we need to develop a culture of debate, dissent and discussion, which I think that we are lacking. Today if I criticize Mr. Narendra Modi for whatever decision he has taken, अगर मैं बोलूँ एक मगरमच्छ को पकड़ने के लिए आपने पूरे तालाब से पानी निकाल दिया और सब मच्छी जो है वो मर गई, then somebody will tell me that you are an agent of Congress. ये नहीं होना चाहिए. This is the only point. मैं इस फंक्शन में न नरेंद्र दाभोलकर की बात करना चाहता हूँ, न गोविंद पानसरे की बात करना चाहता हूँ, न कानपुर की बात करना चाहता हूँ. आई एम ओनली सेइंग कि डेमोक्रेसी में मेरा जो एक आवाज है, आई मस्ट हैव ए राइट टू एक्सप्रेस माय ओपिनियन. आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो, लेकिन डिसेंट जो है उसको एक वॉइस होना चाहिए. दैट इज द ओनली कंसर्न. बाकी अगर डेमोक्रेसी में किसी जर्नलिस्ट को विसल ब्लोअर करने की अनुमति नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि वो सोसाइटी सर्वाइव कर सकती है. पैनल डिस्कशन में बाकी के इश्यूज जो हैं वो हम डेफिनेटली डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन मधुर भंडारकर ने जो बात कही कि उसको स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि उसने वो डायलॉग कहा, मैं आपको एक ही बात करके अपनी बात पूरी करना चाहता हूँ. व्हेन आई वाज स्टडीइंग इन फैकल्टी ऑफ सोशल वर्क, I was given a placement in IPCL, in faculty of social work, while I was doing my post graduation. If you get internship in IPCL in those days, 85-87 batch, I am talking to you, IPCL was considered to be नवरत्न, है ना. अगर IPCL में आपको प्लेसमेंट मिलता है या इंटर्नशिप मिलती है, you are sure to become जनरल मैनेजर, पर्सोनल और इंडस्ट्रियल रिलेशन, पर्सनल मैनेजमेंट या फैक्ट्री मैनेजर बन सकते हो. मेरे से गलती ये हो गई कि मैंने ये एक आई वाज राइटिंग ए कॉलम फॉर इंडियन एक्सप्रेस एंड लोकसत्ता जनसत्ता न्यूज़पेपर इन दोज डेज, वीकली कॉलम अबाउट यूनिवर्सिटी, एंड लॉर्ड बिपू पारेख वाज माय वाइस चांसलर, एंड इन अ कन्वोकेशन एड्रेस ही सेड, माय student of 3rd year is advising his vice chancellor that how to run a university. And I distinctly remember that Professor Mulkraj Anand was sitting on the dais and he said that boy is right, Mr. Vice Chancellor, you should consider his dissent also. If he is advising, if a student is capable to teach his teacher, you must accept it. So we belong to that culture of MS University. And in those days, to become a Vice Chancellor, the qualification need not be a member from BJP party. Okay, which has become the case today. And there is no exception today. But I am not here to make that point. But रघुवीर भाई શું થયું ખબર છે? क्योंकि मुझे गुजराती में भी बोलने के लिए कहा कि मैं કોલમ લખી, એમાં મેં લખ્યું કે જે IPCL પ્રોજેક્ટ જે બન્યો એની જે જમીન જે લોકોએ આપી, એ જે લોકોએ જમીન આપી એ બિચારા 5 રૂપિયા ને 7 રૂપિયા ને 10 રૂપિયામાં ત્યાં ડેઈલી વેજર તરીકે બહાર જોબ લેવા માટે લાઈનમાં ઊભા હતા અને એ લોકો બિચારા રોજ તડફડતા હતા, કોકને એક દિવસ જોબ મળે, એક દિવસ ના મળે. સો આઈ સેડ કે આ સહિતો અને રહિતો, હેવ્સ અને હેવ નોટ વચ્ચેની એવી એક લાઈન છે કે IPCL ની આ બાજુ કામ કરતા લોકોને 110 રૂપિયાનો ડેઈલી વેજ મળે છે, જે લોકો કન્ફર્મ થયા છે, જે લોકો આઉટસાઇડર્સ છે, અને જે લોકોની જમીન પર આ પ્રોજેક્ટ મળ્યો, હે ને, જે લોકો રિપ્લેસ થયા, ડિસ્પ્લેસ થયા, કારણ કે નર્મદાની ડિબેટ ત્યારે ચાલતી હતી, મેધા પાટકર વર્સિસ big versus small. So I wrote that. Next day all my faculty professors decided, because Hasmukh Sir was the chairman of IPCL, he complained that one of your student intern has written against my IPCL organization. Next day they decided to send me to mental hospital અને કહ્યું કે આ બહુ બોલબોલ કરે છે ને એને મેન્ટલ હોસ્પિટલમાં જઈને સોશિયલ વર્ક કરવાની તક આપો. અને રઘુવીરભાઈ ફાયદો એ થયો કે મેન્ટલ હોસ્પિટલમાં હું 6 મહિના રહ્યો ત્યારે મેન્ટલી ડિસેબલ્ડ, એબનોર્મલ, સ્કિઝોફ્રેનિક, સુસાઇડલ ટેન્ડન્સી, એબનોર્મલ લોકો સાથે કામ કરવાનો જે અનુભવ મળ્યો ને
એને કારણે ગાંધીનગરમાં સચિવાલયમાં બ્યુરોક્રેટ સાથે, પોલીસ ઓફિસર સાથે, નેતાઓ સાથે કામ કરવાનું. I think I'll have to go to this language. अजय भाई, आपको मैं ध्यान दिया अजय भाई ने डिजिटल डिवाइड की बात करी है. You see, प्रदीप आपका माइक दिस माइक आपके आवाज को कोई रोकने की कोशिश कर रहा है. आवाज रुकेगी नहीं. पानी की तरह ये अपनी सतह पूरी ढूंढ लेती है. अजय भाई ने डिजिटल डिवाइड की बात करी. इससे पहले के सेशन में Bhanit was interacting with Raghu Bhandarkar. He was on iPad, you know, and you and I are with pen and paper, you know. So here's the digital divide. But अजय भाई ने एक और बात करी, वो मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट की. Thank you for raising that issue because that time at least consent was manufactured for an opinion, and the opinion might be right or wrong. It led to a large scale bloodshed. But आज के ज़माने में क्या हो रहा है? ये consent is not being generated or manufactured for that opinion. It's being manufactured for advertisers and advertising. We'll come to that hopefully in the next few minutes. Now, हम लोग आएंगे. Hopefully we'll be able to discuss that issue. But हमारे बीच में एक ऐसे हैं panelist who has been on the journalism side, and then after some time she decided that she'll she will be in fiction also. So before I come to Anurita, who dabbles with local prose and Tuhin, may I request Kiran to have her views here. Thank you so much, and hello Ahmedabad, it's lovely to be here and to see a full house. I'm absolutely delighted. So 3 cheers for all of you for turning up on a Saturday. And it was very interesting to listen to the views of my co-panelists on the digital divide, on how you have to struggle for TRPs as well as manufacturing consent and being open to dissent. I'd like to just talk about, for a very short time, about not fictionalization of news, but dramatization of news. What I feel is what we get right now is not necessarily fictionalized, but what is happening is dramatization, and I would trace it back to how many of you were around when the Iraq war happened and watched it on television? Not too many hands. Oh, the first one, the one with Saddam, with Vienna. So that set off a precedent of bringing news and dramatic news like war live into our living rooms. We became consumers of war, something as brutal and graphic as war, like a television show. This continued with the Kargil War. The Kargil War came into our homes, and we had live experiences of the brutality of war. What it did while bringing information to us, I think I speak not as an ex-journalist, but I speak as a consumer of news. It made us passive consumers of news. It made us want thrills from news, which we were otherwise getting from the movies, from books, from other narratives, and that has done a bit of a disservice to us as consumers. Because we are not looking at news for purely information, we are looking at news to entertain us now, and that is not the job of news. The job of news is to provide us with information and to let us think and decide what our stance is on the particular news. But what we are doing now is, because we are being entertained, we are seeing in binaries. We are seeing Jihadi John. How many of you have seen Jihadi John and the clips from the ISIS war? So he's the bad guy out there. And there are the good guys who are fighting against him. Everything in the world is now being divided into binaries, and that is not what news is about. News is grey. News is all the shades of grey, and as consumers, I think I put the onus back on us. I understand the pressure. Ooh, somebody was... Okay. We found the culprit.
I understand the pressures of the electronic media for, we have 800 channels, of which 400 are news channels. So the demand for news is there, but the viewing percentage is minuscule, it's less than 1%. Okay, while general entertainment is 40%, if I'm not mistaken. So I understand the pressures for the news channels to get the TRPs. I understand the pressures for print medium to retain readers. But I also realize that there's a very strong onus on us as consumers of news to demand news that is unbiased and to demand and to be able to filter through what we are being told to read into the news. Unless as a community, as a people, we learn to do that, we will be swept along, like the Macarena. We will be swept along by the wave of what people want us to believe. So the onus, I would like to bring it back solely on the reader and the consumer of news. Thank you, Kiran. Kiran talked about dramatization of news, and we were talking about sensationalization of news. Tuhin, before I come to you, I would like Anvita to come here because dramatization in some manner, journalism has been practicing. Now, I mean, I'm sure many people may not agree with me. You don't have to agree with me. But you know, the way we write, that also makes a lot of difference. And there is a certain brand of journalism, a certain kind of journalism, we call it feature writing. That is what Amrita has been doing and specializing for many years. And that is nothing new. I have a passage from 1965 Inquirer, US magazine. I'm just reading it out to you. What I'm trying to figure out this, or trying to bring this to our discussion, that is dramatization only to be done to sensationalism. Here is the passage, a very small passage, 4 or 5 lines. 10 o'clock Sunday morning in the hills of North Carolina. Cars, miles of cars in every direction. Millions of cars, pastry cars, aqua green, aqua blue, aqua blues, aqua buff, aqua dawn, aqua dusk, aqua malaka, malaka lacquer, cloud lavender, assassin pink, raker chick, raspberry, nude strand, coral, honest thrill, orange, and baby fawn. Lush cream colored cars are all going to the stock car races. And that old mothering North Carolina sun keeps exploding off the windshield. Mother tongue. This is the kind of writing. It's nothing new. 1965 from a US magazine. Is dramatization necessary to be on that exciting, energy-filled, bubbling? You have to bounce out of the screen or bounce out of pages? Or can it be done in a more creative manner? Anvita. See, thank you, Pradeep. I think the thing is that there have been so many words in the recent past that one has heard. Masala being one of the most popular ones. लोगों का बहुत कहना है कि मसाला बहुत होता है न्यूज़पेपर में. आप लोग मसाला बहुत लिखते हो. The ones there are others who use the word कि न्यूज़ को बहुत ग्लैमराइज करके लिखा जाता है. जो आता है वो एक्चुअली सच में होता नहीं है और जो होता है वो आप लोग बताते नहीं हैं. Another way, when you meet people, literateurs and all, they say that, oh, there is so much of purple prose in newspapers and magazines now. The thing is that in whether it is a newspaper or a magazine, I will not speak much about television here, but I would want to say that when we talk of print media, you have all kinds of news and all kinds of writing within one newspaper. तो आपके पास अगर आप एक मर्डर की स्टोरी लिख रहे हैं तो उसमें फैक्ट्स ज़्यादा होंगे एंड ये सब जो जिसे हम पर्पल प्रोज बोलते हैं ये वहाँ पे नहीं होगा. पर अगर आप कोई एक फैशन शो डिस्क्राइब करना चाहते हैं और वहाँ का एम्बियंस डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो आप एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड होके आप नहीं बोल सकते. यू कैन नॉट से दैट कटरीना कैफ एंड रणवीर कपूर are going to walk the ramp. You will want to say the glamorous Katrina Kaif is going to swing along with the handsome Ranveer Kapoor, or things like those. So there is a difference between what part of the newspaper or magazine you are reading. एक और चीज़ जो मैंने notice की है, when we talk of youth, I often interact with college and school students, and they always say कि मैम आप कौन से वाला which part of the newspaper are you looking into? So अब बाहर के लोगों को समझाना थोड़ा
कभी मुश्किल हो जाता है. There is a sports section, there is a news section, there is a features section. The moment I say that I'm the features editor or I've been with features all my life, so they ask कि वो कौन सा part है newspaper का? So I say that वो जो सारा interesting चीज़ आप paper में देखते हो, travel, क्या हो रहा है, what's happening, I explain it like that in a lighter vein. So people always say, oh, जिसमें मसाला बहुत होता है. So you see, the thing is, unfortunately, when we are talking about people, when we are talking about what they did, when we are talking about the trends in the city, in the country, in the world, when we are talking about fashion, when we are talking about changing perceptions, all that, we need to somewhere use language which is going to interest and absorb the reader. Whereas when we are having material which is to do with the very hardcore stories, it could be politics, it could be education, it could be murder, we have those kind of stories, we try and stick more to facts. So there is this huge divide between the two, and I think the key reason is that we are trying to give every kind of reader something. So if you are reading news which is lighter news, which is not about all these hardcore happenings around, तो ऑटोमेटिकली आपकी लैंग्वेज अलग होगी. और दूसरी किस्म की राइटिंग है तो उसमें लैंग्वेज ऑटोमेटिकली थोड़ी फ्लावरी या थोड़ी मसालेदार लगेगी, होगी नहीं पर लगेगी. और दूसरी एक चीज़ मैंने ये देखा है that somewhere or the other there is, let us face it, that there is a lot of competition now. There are too many newspapers. ये सेम अहमदाबाद में 10 साल पहले शायद 2 इंग्लिश न्यूज़पेपर्स थे. Today there are quite a few, I mean at least 4 that I can think of. Gujarati newspapers पहले 1 या 2 थे. Now there are 5 leading Gujarati newspapers, and so we've seen that there is competition. Whether you want to treat them as one or not, you have to, because everyone at the end of the day in the morning is getting a newspaper, and everyone is open to some kind of critique. आज ये आया, अरे मारा पेपर में तो आવું બધું આવે છે, હું તો आज शिफ्ट करवानी છું, હું આ કરવાનું. There is this thing that people, when they meet, these morning talks that people have over their tea, or when friends meet outside in the college campus canteen, they are bound to talk about what all the newspaper is carrying. And because each newspaper sometimes, unfortunately or fortunately, carries news and different angles of the same news, that is why I think that thing has been largely responsible for people saying and thinking that news is now getting fictionalized. So if a Divya Bhaskar, for example, writes news in a certain way, same news, the basic facts will be the same, but the way they put it, it's a different writer who is interviewing, so they have a different set of stories. Or Nav Gujarat Samay, for example, will take it in a different, they will also interview. So if some event which involves 5 people are there, 3 people may be interviewed by one newspaper journalist, and 4 may be interviewed by another. So there is bound to be a certain disparity. उसको अगर लोग बोले कि fictionalize करते हैं, तो it is a little unfair on all journalists and overall. But yes, there is a tendency to sort of write in a manner that automatically arrest attention to your newspaper or to your television channel or to your magazine. That is definitely. Thank you, Anuruddha. Amid us, we have somebody who writes a column or kahani bhi. To him. Hello everybody. It's been an enriching experience listening to my fellow co-panelists. What I feel is the advent and the subsequent domination of social media is so humongous that we are yet to acknowledge it completely. So, in our growing up years, we've probably been brought up being told to exercise moderation, to exercise balance. Now is the time when unless you do away with balance, unless you do away with moderation, you would not be recognized. So it's no longer about reporting a news incident, it's about setting a conscious narrative, which in as much as you may dislike, is going to be here to stay. Because there are that many sources of news. For example, what Twitter or what Facebook has done is it's given a voice to everybody. Somebody who might be, struggling in office can come out with a bold statement, India needs to act strongly against Pakistan, and that can get retweeted 100 times. So, but that's one part of one aspect of the whole situation. What is still a little inexplicable is a definite disconnect which I often see between what a journalist might want to wish
might wish for and what the ground reality is. As you probably saw in the US elections and the US results, it's a little inexplicable, it's a little strange that none of the media houses were aware of the kind of disconnect the Democrats had with the masses. In India, a few months back, some of the journalists catapulted a JNU leader to a position where they started hallucinating, tough competition to the Prime Minister. So this disconnect is something which is born out of prejudice and which I feel can be done away with or be prevented. Thank you, Tuhil. We are running short of time. We have heard all the panelists. There are quite a few issues to be discussed, but I'm afraid we will not be discussing too much of those issues. मैं कोशिश ये करना चाहूँगा कि क्या हम आगे बढ़ पाएँ, और आगे बढ़ने के लिए what is the way forward. मैं straight वे उस पे आता हूँ. ब्रजेश भाई, क्या आप इस पर हमें कुछ enlighten करेंगे? What is the way forward? क्या एक बैलेंस बनाया जा सकता है? क्या TRP रिटेन करने के लिए मैं जो जर्नलिज्म का जो बेसिक फाउंडेशंस हैं, कि ट्रुथ से चिपके रहना है, माय ऑब्लिगेशन इज टुवर्ड्स माय सिटीजन, और मेरी प्रोफेशनलिज्म कहती है कि बिना क्रॉस चेक किए हुए कुछ नहीं बनाएंगे, क्या हम आगे कैसे बढ़ें इसमें? देखिए, रास्ता है, लेकिन उस रास्ते पे जाने से पहले हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड भी समझ लेना चाहिए, क्योंकि बार बार आप देखेंगे मैं इतिहास की तरफ आपको लेके जाता हूँ. आज हम जब कहते हैं कि कंटेंट आपका बिल्कुल अनबायस्ड होना चाहिए, उसमें व्यूज़ नहीं होने चाहिए, आप इस देश में प्रेस का इवोल्यूशन तो देखिए. मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग जर्नलिज्म की हिस्ट्री से अवगत होंगे. 1780 मेरे ख्याल से उस साल था जब इंडिया में फर्स्ट, अगर आप उसको न्यूज़पेपर कह लें, बंगाल गैजेट पब्लिश हुआ कोलकाता से. वारन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल. क्या था उसका एम ये नहीं था कि लोगों को एक क्लियर कट रिपोर्ट देनी थी, बल्कि एम ये था कि वारन हेस्टिंग्स का जो अपोजिशन था उसी ईस्ट इंडिया कंपनी में, उसके जो है अपने विचारों को जो है सो वारन हेस्टिंग्स के सामने डाला. अगर इंडिया में हम प्रेस कहें, जो फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस आई किस लिए आई? अगर आप देखें जो हमारा साउदर्न आज का जो केरला है, केरल, वहाँ पर जो पुर्तगीज मिशनरीज थे वह पहला प्रेस लेके आए. क्या करने के लिए आए? तो कोई अखबार छापने के लिए नहीं आए, अपने विचारों को आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए, कन्वर्जन के लिए आए. उसके आगे आइए आप, इस देश में जो है फ्रीडम स्ट्रगल के समय का जो प्रेस था, मोस्टली जो है सो या तो कवि साहित्यकार चला रहे थे या फिर जो सो ब्रिटिश इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए चलाए जा रहे हैं. उसके बाद का तो जाहिर है कुछ मुट्ठी भर इंडस्ट्रीज थे. आज भी आप ऑनरशिप का पैटर्न देखिए जो है उसी तरह का. अब आप कहें कि रास्ता क्या है? जब फैक्ट्स जो है उसमें बहुत ज़्यादा फिक्शनलाइजेशन ना हो और बहुत ज़्यादा जो है व्यूज़ को मिलाए बिना लोगों तक पहुँच सके. जहाँ तक टेलीविज़न का सवाल है, देखिए न्यूज़पेपर का जो धंधा है, मैं धंधा इसलिए कह रहा हूँ कि एंड ऑफ द डे कॉर्पोरेट इंटीरियर है तमाम, कि अगर उसको सर्वाइव होना है आपको जो है पे करना होगा उसके लिए, जो कि हम में से कोई बैठ के पे नहीं करता. एडवर्टाइजमेंट पे आपकी डिपेंडेंसी, उसी तरीके से टेलीविज़न का हाल है. हम कितने लोग हैं जो कि हम उसके लिए पे करते हैं, तो उसके लिए हम अगेन कमर्शियल्स पर डिपेंडेंट हैं. अगर मान लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन से होने वाली इनकम अगर वो बढ़ती चली जाए, टेलीविज़न के केस में तो शायद मेरी अगर डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, तो मैं कंटेंट जो है सिर्फ और सिर्फ मार्केट को न सोचते हुए मैं अपने व्यूअर को सामने रखते हुए बनाऊंगा. उन तरह की चीज़ों के बारे में सोचूंगा जिसकी भले TRP ना आए, लेकिन उन लोगों को अच्छी लगे. जाहिर है इसमें कैच ये है कि अगर अच्छी लगे तो फिर क्यों नहीं यूनिवर्सिटी. बहुत बार ऐसा होता है इंडिया में, जो इस तरह के एक्सपेरिमेंट रहे हैं. आप NDTV हिंदू का एक्सपेरिमेंट अगर आपको ध्यान, साल भर भी नहीं चल पाया, डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट लोग नहीं निकाल पाए और बंद करना पड़ा. तो वे अहेड है, कंपटीशन है. अगर आप ये भी देखें तो हम लोग हमेशा बड़े निराशाजनक भाव से कहते हैं कि साहब बड़ा ख़राब हो गया. आज से 20 साल पहले ऐसा नहीं था कि कोई स्वर्णिम काल था मीडिया. पहले भी चीज़ यही थी. अभी ये है कि स्क्रूटनी बहुत ज़्यादा हो गई है. इमरजेंसी की बात करें, इमरजेंसी में पत्रकार साहित्यकार किस तरह का बिहेव कर रहे थे, किसी से अछूता नहीं. आपने अभी फिक्शनलाइजेशन की बात हम लोग चर्चा कर रहे हैं. 2 आपको घटनाएँ बताता हूँ जो कि 2002 गुजरात के जर्नलिज्म के हिसाब से रेफरेंस पॉइंट है, लिटरेसी के हिसाब से भी रेफरेंस पॉइंट है. न्यूटन्स थर्ड लॉ, ये कहा गया कि मोदी ने राइट्स को जस्टिफाई करने के लिए न्यूटन्स थर्ड लॉ की बात की. एक बहुत बड़े पब्लिकेशन ने इसको प्रोपोगेट किया. आपको शायद नहीं याद होगा कि उसने जो है उसकी माफीनामा भी छापा था अखबार में और उससे पीछे आया.
इसी तरीके से साहित्यकार बैठे हैं अंशु मालवीय करके कल, जिन्होंने एक कविता लिखी और गुजरात में 2002 का सबसे खराब राइट्स केस था नरोड़ा पार्क। वहाँ एक लेडी की हत्या हुई थी, जला के मार डाला गया था, लेकिन फिक्सलाइजेशन हुआ, जो उसका पेट फाड़ के और जो उसके घर में जो बच्चा था उसको तलवार के ऊपर उठा के डाल दिया था। अनट्रुथ थे जिस तरह की कविताएं और कहानियां लिखी। तो ये सोसाइटी में हम भी हैं, आप भी हैं, तमाम लोग हैं, और हम सभी लोग इसके लिए दोषी। रास्ता ये है कि कंपटीशन जो कि आपको बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगा, बिकॉज जब तक आप क्रेडिबिलिटी नहीं हासिल करेंगे अपने व्यूअर्स का, प्रेरिटर्स का, आप आगे नहीं कर पाएंगे। दूसरा, जैसे जैसे जो है रेवेन्यू पैटर्न हमारा चेंज होता जाएगा, डिस्ट्रीब्यूशन पे हमारी डिपेंडेंसी जो है उससे अर्न करने की होगी, ना कि उस पर खर्च करने की चीज़ें बेहतर होंगी। और सबसे बड़ा सोशल मीडिया, आप देखिए हम उस इम्पैक्ट में हम उस प्रेशर को फील कर रहे हैं और हम उसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं अपने लेवल पर। इतना निराशाजनक भाव लेने की जरूरत नहीं, तस्वीर आगे अच्छी रहेगी। यस, ब्रिजेश ने बहुत ही अच्छे पर्सपेक्टिव में बात बताई, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे उस एंगल को टच नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं जो फिक्शन और फैक्ट की बात करता हूँ, एक कन्फेशन के साथ बताना चाहता हूँ कि अगर मैं फैक्ट लिखना चालू करूँ ना, तो मुझे शायद ये देश छोड़ देना पड़े। मैं आपके सामने एक कन्फेशन करना चाहता हूँ कि एक बार मैंने सत्य लिखा था, लेकिन थोड़ा रिस्क लेके लिखा था, जो प्रदीप मलिक शायद उसको अप्रूव ना भी करे, बराबर है, क्योंकि जर्नलिज्म में कहा जाता है कि यू नो व्हाटएवर यू राइट यू जस्ट चेक इट आउट, एंड इफ यू कैन नॉट चेक इट आउट यू थ्रो इट आउट, बराबर है कि नहीं। लेकिन मुझे लगा कि कुछ गैम्बल करना चाहिए। हुआ ये कि बड़ौदा में बुश ट्रेजेडी हुई, अमर सिंह चौधरी वॉज चीफ मिनिस्टर, एंड अमर सिंह चौधरी वॉज चीफ मिनिस्टर, और वहाँ वो एक छोटी बचत का एक प्रोग्राम चल रहा था, उसमें एक मशहूर गजल सिंगर जो थे वो गजल गा रहे थे, शिवरात्रि की रात थी, और भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलए जो अब एमएलए हो गए हैं, उस जमाने में बूटलेगर हुआ करते थे, उसके खिलाफ मैंने एक स्टोरी लिखी। तो वो बूटलेगर के खिलाफ मैंने स्टोरी लिखी, और स्टोरी ये थी कि ये बूटलेगर जो है उसने एक रिलीजियस ट्रस्ट बनाया है, शिवजी का ट्रस्ट, और वो ट्रस्ट के नाम पे वो जो एम्बुलेंस है उसमें एम्बुलेंस में वो दारू की हेराफेरी करता है। तो वो माफिया टाइप आदमी था, मसलमैन था, मेरी ऑफिस में आया, बोले कल तुम्हारा अखबार जो है मैं जला दूंगा, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होने दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। मैंने बोला कि फैक्चुअली हम करेक्ट हैं, तुमको जो करना है करो। बाद में मैंने भी पुलिस कमिश्नर को कंप्लेंट की, फाइनली उसके साथ कॉम्प्रोमाइज हुआ कि मारू नाम लखो तो जरा फोटा साथे लखो तो लोगों ने खबर पड़े कि हूँ मसलमैन, ठीक है। दूसरे दिन रात को, शिवरात्रि की रात को, मलिक हुआ ये कि सब आई वॉज चीफ रिपोर्टर और बाकी सब रिपोर्टर्स चले गए थे, मैंने सबको जाने भी दिया कि जाओ गजल सिंगर को एंजॉय करो। एंड सडनली अराउंड 10:30 इन द नाइट ये माफिया ने मुझे फोन किया और बोला कि अजय भाई તમે કાયમ અમારી વિરુદ્ધ લખો છો, આજે કે અમે માનવતાનું કામ કરીએ છીએ, આજે અમારી એમ્બ્યુલન્સનો સારો ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે, તો જરા લખો। મેં તો શું થાય છે? એને કહું કે પેલો એક લઠ્ઠાકાંડ થયો છે ને, એમાં ઘણા બધા લોકો મરી ગયા છે ને ઘણા બધા દર્દીઓ છે, એને હું હોસ્પિટલ પહોંચાડી રહ્યો છું। 10:30 in the night, I said કે લઠ્ઠાકાંડ થયો છે કે હા બોસ। મેં કહું ક્યાં? તો એને કહું કે પાણીગેટ પાસે ફલાણી ચાલીમાં। So I immediately rushed to the hospital. When I reached to the hospital, 28 dead bodies were lying on one side, અને બીજા ઘણા બધા લોકો આવી રહ્યા હતા। So I asked Dr. Purandare. Dr. Uday Purandare was head of the forensic science department. મેં કહ્યું બોસ શું છે? He said કે અજય, આ જે મિથાઇલ આલ્કોહોલની જગ્યાએ મિથાઇલ આલ્કોહોલ જે છે એની અંદર કંઈક ડિનેચર્ડ સ્પિરિટ જે છે એ આવી ગયું છે, અને એને કારણે મને કે આ બધા જ લોકો જેટલા પણ આવે છે એ બધા જ મરી જશે। મેં કહ્યું કેમ? મને કે ટિપિકલ સિન્ડ્રોમ છે કે ઓપ્ટિકલ નર્વ પર સૌથી પહેલી અસર થઈ રહી છે, એટલે આ બધા લોકોને બ્લાઇન્ડિંગ આવી રહી છે, અને પછી એમ કે આ બધા મરી જશે, એટલે કે જેટલા લોકો અહીં હોસ્પિટલમાં આવે છે એ બધા મરી જશે। મેં કીધું બોસ કે ઇલાજ? મને એને એવું કીધું ફેક્ચ્યુઅલી, he said we are expediting their death। મેં કીધું કેમ? એ કે આ બધા કોંગ્રેસના અને ભાજપના બધા નેતા આવ્યા છે ને, કહે છે કે સાહેબ બધાને ગ્લુકોઝ લગાડો, બધાને ગ્લુકોઝ લગાડો। હવે કે આ બધાને કે ગ્લુકોઝ સેલાઇનના જેટલા બોટલા આપીશ એટલું ઝડપથી એમ કે બ્લડ સર્ક્યુલેશન વધશે અને આ લોકો જલ્દી મરી જશે। મેં કીધું કેટલા લોકો લાગે છે? મને કે 75 એડમિટ થયા છે, they all will die। બટ કે ઓફિશિયલ ફિગર ઇફ યુ આસ્ક, ગો એન્ડ આસ્ક સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ એવું કહ્યું કે ના 10 લોકો જ મૃત્યુ પામ્યા છે। આઈ કુડ કાઉન્ટ ડેડ બોડીઝ કે 28 મર્યા છે। I went to the chief minister's function. पुलिस कमिश्नर
સુધી પણ હું પહોંચી ના શક્યો. 2 ડેપ્યુટી કમિશનરે કહ્યું કે સાહેબ ઉપર સ્ટેજ પર બેઠા છે, તમે ના જઈ શકો. મેં કહ્યું બોસ, પીપલ આર ડાઇંગ ધેર. હવે એને મને એવું કહ્યું કે જો આનો ઈલાજ જે છે ને એવો છે કે દારૂનું મારણ પણ દારણ જ છે. મિથાઇલ આલ્કોહોલ જો એ લોકોને સારી ક્વોલિટીનો પીવડાવવામાં આવે તો બોડીમાં ટાઇટ્રેશન થઈ જશે અને આ બચી જશે. પણ એ દિવસે શિવરાત્રિની રાત હતી, બીજા દિવસે શનિવારનો સરકારી રજાનો દિવસ હતો, બીજો દિવસ રવિવાર હતો, એટલે સરકારી ડિપાર્ટમેન્ટવાળા તાળું મારીને જતા રહ્યા હતા. એન્ડ નોબડી વોઝ વિલિંગ ટુ પ્રોવાઈડ પ્યોર આલ્કોહોલ ટુ ધીસ પીપલ. હવે સાહેબ મેં બહુ જ કોશિશ કરી, આઈ કુડ નોટ રીચ ટુ ધ ચીફ મિનિસ્ટર. એટલે હું પાછો ગયો, મેં પૂછ્યું કેટલા દાખલ થયા, એને કહ્યું 112 દાખલ થયા. મેં કીધું બોસ બધા જ જશે? મને કે બધા જ જશે. I was chief reporter in Lok Satta Jansatta and I was also sending column for Indian Express. તો Indian Express ના chief reporter ત્યારે કિરીટ ભટ્ટ હતા. અમે બંને રિસ્ક લઈને 123 લોકોને મારી નાખ્યા. જ્યારે બીજા બધા લોકલ ન્યૂઝપેપર, સંદેશ, ગુજરાત સમાચારમાં કૂટમાં 23 મર્યા અને કૂટમાં 39 મર્યા. લેટ નાઇટ એ લોકોએ 39 માર્યા. બીજા દિવસે પહોંચી ગયો કારણ કે 123 લોકો મરી ગયા અને ન્યૂઝપેપરમાં આવ્યા. અમદાવાદ બરોડા શહેરનો પોલીસ કમિશનર બદલાઈ ગયો અને આ બધી ઘટનાઓ તો થઈ. હકીકત એ થઈ કે મને પકડવામાં આવ્યો કે તમને સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટે ના પાડી કે તમે વધારે કેમ મર્યા. મેં સાહેબ અત્યારે 137 લોકો મરી ગયા છે. 11 વાગે જ્યારે મને બોલાવવામાં આવ્યા ત્યારે 137 લોકો મરી ગયા હતા. વિધાઉટ વેરીફાઈંગ મેં લખ્યું હતું, એને કારણે થોડી કિંમત ખુલી ગઈ કારણ કે હું બરોડામાં હીરો થઈ ગયો કે બોસ આને એકલાએ લખ્યું, લોક સત્તા જનસત્તાની સ્ટોરી સાચી પડી. એ જે એના પછી એક કમિશન રચાયું. એ કમિશનમાં જવાબદાર એક પોલીસ ઓફિસર હતા કે જેને આ સપ્લાય કર્યો હતો. એ સપ્લાય માટે એને એ કર્યું હતું. એટલે પોલીસ ઓફિસરની સામે જજે પોતાના રિપોર્ટમાં કહ્યું હતું કે આ પોલીસ ઓફિસરને સસ્પેન્ડ કરી દેવો જોઈએ કારણ કે એ આ કાંડમાં ઇન્વોલ્વ હતો. એ ન થયો અને પાછળથી એ એન્કાઉન્ટર સ્પેશિયાલિસ્ટ બની ગયા. પણ એ પછીની વાત છે, એ ચર્ચામાં હું નથી પડતો. મહત્વની વાત છે કે મને એવું થયું કે થોડું રિસ્ક લઈને રિપોર્ટિંગ કરી શકાય. એટલે હું જ્યારે અમદાવાદ આવ્યો ત્યારે ખબર પડી કે રાજુ રિસાલદાર નામનો એક ક્રિમિનલ જેને મુંબઈમાં પોલીસે પકડી લીધો હતો અને મુંબઈ પોલીસ સાથે ગુજરાતના ચીફ મિનિસ્ટરની વાત થઈ ગઈ હતી કે બોસ અને તમે ત્યાં જ પતાવી દેજો, અહીં લાવતા નહીં. એટલે એને એવું કહ્યું કે સારું, મુંબઈના આઉટસ્કર્ટ્સમાં એને પતાવી દઈશું. રાતના 7 વાગે જ્યારે મારી પાસે સ્ટોરી આવી કે પકડાઈ ગયો છે, કન્ફર્મ છે, પોલીસ ઓફિસરે કીધું, મેં ઠોકી દીધું કારણ કે એ જે વ્યક્તિનું મર્ડર કરીને ભાગ્યો હતો એ સંદેશ ન્યૂઝપેપરનો એડિટર હતો. દિનેશ પાઠક નામના સંદેશના એડિટરને, જે લોકો સિનિયર લોકો છે એમને આ કિસ્સો ખબર હશે. સંદેશના એડિટરને સંદેશ ન્યૂઝપેપરના ઝાપાની બહાર મર્ડર કરીને એ માણસ ભાગી ગયો હતો અને ગુજરાત પોલીસે એને મુંબઈમાં પકડી લીધો હતો. મને થયું કે આ સ્ટોરી લખવી જોઈએ એટલે મેં સ્ટોરી લખી નાખી હેડલાઇન સાથે કે રાજુ રિસાલદારનું એન્કાઉન્ટર. થયું એવું કે શરદ પવાર વોઝ ચીફ મિનિસ્ટર ઇન મહારાષ્ટ્ર અને ખબર પડી કે આ જે છે એ શિવસેનાનો સૈનિક રહી ચૂક્યો છે અને મુંબઈમાં ત્યારે 92-93ના અરસામાં શિવ સૈનિકો અને દાઉદની ગેંગ વચ્ચે ખાસી લડાઈ ચાલતી હતી. એટલે મુંબઈ पुलिस कमिश्नर है शरद पवार कहूँ कि सर ये झगड़े में हमको नहीं पड़ना चाहिए, गुजरात पुलिस को जो करना है वो करे. એટલે એને ગુજરાતના સીએમને કહી દીધું કે બોસ ये तुम संभालो, मैं इसको यहाँ से विदा करता हूँ. એટલે ગુજરાત પોલીસ એને લઈને આવી. મને મારા છાપાના એડિટરે કહ્યું કે બોસ પેલો મર્યો નથી, શું કરશું? મેં કીધું સાહેબ આપણને સીએમ અને પોલીસ ઓફિસરે કહ્યું છે પતાવી દઈશું, તમે લખી નાખો. So he said okay. So this encounter thing is nothing. હું આઈ એમ કન્ફેસિંગ અને એ પછી પણ હું વાસ્તવિકતા કહું છું. મેં લખી નાખ્યું કે રાજુ રિસાલદારનું એન્કાઉન્ટર છપાઈ ગયું. રાતના 12 વાગે વડોદરા શહેરના તમામ રેલવે સ્ટેશન પર, વડોદરાથી ભરૂચ જતા ટ્રેનોમાં, સુરતમાં, કારણ કે અમારા છાપાની 5 એડિશન હતી એટલે મુંબઈ એડિશનમાં છપાઈ ગયું, સુરતમાં છપાઈ ગયું, વડોદરાએ છપાઈ ગયું, અમદાવાદમાં પણ છપાઈ ગયું કે રાજુ રિસાલદારનું એન્કાઉન્ટર. અને મુંબઈ પોલીસ તો કેટલી સ્માર્ટ છે કે મુંબઈ પોલીસને ખબર પડી કે આ લોકો એન્કાઉન્ટર તો કરી જ નાખવાના છે. એટલે મુંબઈ પોલીસમાં દાઉદ રિલેટેડ જેટલા પણ પેન્ડિંગ કેસીસ હતા એ બધા જ કેસીસમાં એ લોકોએ ટેલિપ્રિન્ટરથી મેસેજ મોકલ્યો કે ગુજરાત પોલીસ હેઝ ટેકન વન ક્રિમિનલ, he is wanted in so many cases, so once your investigation is over, please hand him over to us because we want him in following cases. એટલે એ ટેલિપ્રિન્ટર પર મેસેજીસ ચાલુ થયા એટલે સુરતના રેન્જ આઈજી જે હતા જેના એરિયામાં એન્કાઉન્ટર થવાનું હતું, હી રિયલાઇઝ કે સારું આ માણસનું જો એન્કાઉન્ટર કરી નાખીએ, મારા રિટાયરમેન્ટના 6 જ મહિના બાકી છે અને પાછું પોલીસ ઇન્વેસ્ટિગેશનમાં મુંબઈ પોલીસ આવીને મારી પૂછપરછ કરશે. એટલે એને કહ્યું કે બોસ નોટ ઇન માય ટેરિટરી, ડોન્ટ ડુ ઇટ ઇન માય ટેરિટરી, ડુ ઇટ ઇન બરોડા ટેરિટરી. એટલે બરોડા રેન્જ આઈજીને એને સોપારી આપી દીધી કે મેરે મેં મત કરના. ગુજરાત ડીજીપી થોટ કેવું કે બરોડા રેન્જ મેં કર ડાલેંગે. થયું એવું કે એને લઈને જે પુલિસ ઓફિસરો આવી રહ્યા હતા, ભરૂચ નર્મદા બ્રિજ ક્રોસ કર્યો
અને ભરૂચના પત્રકારોને ખબર પડી કે બોસ રાજુ વિસાલદારને અહીંથી લઈ જવાના છે. એ જમાનામાં વિડીયો લઈને બધા અંકલેશ્વરના બ્રિજ પર ઊભા રહી ગયા એન્ડ ગેસ ફોર રાજુ વિસાલદાર ગોઈંગ. અને મારી પર ફોન આવ્યો કે બોસ છાપામાં છપાઈ ગયું છે, એન્કાઉન્ટર થઈ ગયું છે, પેલાને તો જો હમણાં પોલીસ લઈ જઈ રહી છે. ચિંતા ના કરો, મારું બીપી વધતું હતું પણ બીજું ચિંતા ના કરો, આપણને પોલીસ તંત્ર વિશ્વાસ છે કે એન્કાઉન્ટર કર્યું એટલે કરી નાખશે. સાહેબ રાતના 1 વાગ્યા સુધી એન્કાઉન્ટર ના થયું. મને મારા માલિકે કીધું કે આ નહીં થાય, તારું એન્કાઉન્ટર કરી નાખ. કોઈએ કે તો મરવાનું જ હતું. હવે છાપા છપાઈ ગયા તો 2,67,000 કોપી અમદાવાદમાં છપાઈ ગઈ હતી, વડોદરામાં 1.5 લાખ કોપી છપાઈ ગઈ હતી. કરવાનું શું? અને હું તો માત્ર ભગવાનને પ્રાર્થના જ કરતો હતો, હે ભગવાન જે કરે તે સારું કરજે. થયું એવું કે અમારા બે બહાદુર જાબાજ પોલીસ ઓફિસરો કે જેને રાજુ વિસાલદારને કહેવાતી રીતના ફટકો માર્યો હતો, એમની ગાડીને પંક્ચર પડી ગયું અને બધા પત્રકારો ઘીરી વળ્યા અને બધાએ રાજુ વિસાલદારના ફોટા પાડવાનું ચાલુ કર્યા. પણ પોલીસની સાથેનો જે સ્ટાફ હોય ને એ તો બહુ મજબૂત હોય. એ લોકોએ બધાના કેમેરામાંથી રીલ કાઢી નાખી અને પછી આગળ પોલીસ જાય, પાછળ બધા પત્રકારો કાર, મોટરસાઇકલની પાછળ. છેલ્લે સાહેબ વડોદરા શહેર માજલપુર પાસે પોલીસે જાપો બંધ કરાવ્યો અને પોલીસ આગળ નીકળી ગઈ અને મકરપુરા પાસે એ લોકોએ રાજુ વિસાલદારનું ફાઇનલી એન્કાઉન્ટર કરી નાખ્યું. એન્કાઉન્ટર કરી નાખ્યું એટલે મને બરોડાથી ફોન આવ્યો કે બોસ પતી ગયું. થેન્ક યુ. હવે સાહેબ ટ્રેજેડી સાંભળો. मैं बड़ोड़ा एसएसटी हॉस्पिटल में फोन करो. मैं कहूँ कि बॉस वो राजू विसालदार का एनकाउंटर हो गया, डेड बॉडी आ गई? बोले नहीं आई. मैं कहा बॉस वो वहाँ हो गया, पता चला है, कंट्रोल में मैसेज आ गया है. मैंने कहा कि सर वो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट और वो सुप्रिंटेंडेंट ऐसे कहते हैं कि ही शुड बी ब्रॉट डेड. अगर राजू विसालदार जिंदा हॉस्पिटल में आ जाता है देन एज डॉक्टर यू नो माय ड्यूटी इज टू सेव हिम. એટલે એ લોકોએ ગોળી મારી દીધી હતી પણ પેલો 45 મિનિટ સુધી જીવતો હતો એટલે આ લોકો વાનમાં એને ફેરવતા હતા એમ્બ્યુલન્સ. અને પછી ફાઇનલી એને લઈ આવ્યા. સાહેબ સવારે 7 વાગે રાજુ વિસાલદાર મર્યો અને હું 12 કલાક પહેલા મેં લખી નાખ્યું. ઇન્ટરેસ્ટિંગ સ્ટોરી. સોરી, એક જ વાક્યમાં મારું કહું, આ કેફિયત ગયા પછી જે શું થયું કાનૂની લડાઈ વિશે ચર્ચા નથી કરતો. એ પછી જેટલા પણ એન્કાઉન્ટર થયા મને પહેલા માહિતી હતી, મેં લખ્યું નહીં. I've heard of this story, very interesting stories, right? And I have heard many such stories from. મને ખબર છે કે ફેક્ટ વધારે બોલવા જેવી નથી હોતી. I'm very sorry this is turning out to be an interesting session, but we'll have to cut it short. Should I open this? The floor is open. If anyone has questions, yes, sir. I just wanted to make one very quick observation because all of you talked about the fact and fiction, and Brajesh also spoke about the views being something which have always been a tradition. What I really think is that traditionally in newspaper there were 3 big separate compartments. News used to be news. Columns used to be third-party views primarily, where there were disclaimers by the news that these are columnist personal views, not of the newspapers. And then there were editorials, which were obviously the views of the newspaper. They were the analysis of policies or whatever. Now the lines have blurred. We don't even know whether the news is the editorial or whether the editorial is the news. And we also don't even know whether the columns are those of the newspapers themselves or outsiders. So now this blurring of the line is what has created a confusion. And same is for the television media, where we don't know whether the news is actually an opinion or is news, because we don't hear any news, we hear opinions. There are very clear, unequivocal positions which every news channel has. They don't give us news, they give us opinions of the anchors, because anchors are the stars, right? They are opinion makers, they are not news anchors anymore. And that's the hard reality. The second thing is, I think what is more disturbing, or in fact almost alarming, is the trend in the last 2 to 5 years where our national media is getting divided as patriotic and non-patriotic media. Now this is something which is unprecedented in the history of this country, where the media needs to be colored as either nationalist or anti-nationalist, patriotic or anti-patriotic. I mean, I think this is probably the lowest in the history of the media. And I mean, Brajesh, I would like to hear from you. I mean, on this, as someone who's. Do you want to comment, Brajesh?
One quick answer, and then we'll have one more question. We have terribly short of time. We'll have just one more question from the audience. Thank you so much. अगर आप फॉलो कर रहे हो पिछले कुछ दिनों से टाटा सन्स के अंदर जो चल रहा है, आपकी चिंता को मैं सही ठहरा रहा हूँ। आप लीडिंग न्यूज़पेपर्स को देखें, पेज वन स्टोरीज जो कि उम्मीद की जाती है कि बिल्कुल ही न्यूज़ होंगी, उसके अंदर जो है सो व्यूज़ को इतने बेहतर ढंग से वीव किया गया है और किसका क्या इंटरेस्ट है आपको ख्याल होगा। ये कोई नई चीज़ नहीं है। इसी अगर आपको याद हो रामनाथ गोयनका के समय में जो फाइट चल रही थी गोयनकाज एंड अंबानीज की, जिसमें आज दूसरी वाडिया का नाम फिर से आ रहा है अलग कंटेक्स्ट में, तो उस जमाने में भी जहाँ तक व्यूज़ और न्यूज़ के सेपरेशन की बात है, यह सेपरेशन जो है फ्रैंकली स्पीकिंग कभी रहा नहीं। आज हम आपने नेशनल एंटी नेशनल इस तरह के कैंप की बात की। अगर आप देखें तो आज से 30 साल पहले ये डिबेट होती थी कि आप सोशलिस्ट कैंप के हैं, कम्युनिस्ट कैंप के हैं, या फिर जो है सो हार्डकोर राइट विंगर हैं। एक जमाना ये भी था कि मीडिया में अपने को राइट विंगर कहना बड़ा सुसाइडल होता। अगर आप 10 साल 15 साल पहले याद करें तो एक चेहरा याद आता था, स्वपन दास गुप्ता। आज बड़ा फैशनेबल है अपने को राइट विंग के खाते में डालना, बिकॉज सेंटर में पहली बार फुल मेजोरिटी वाली कोई राइट विंगर पार्टी। तो हम लोग, मैं बिल्कुल यह कहने की कोशिश नहीं करता कि बड़े ही बुनियादी तौर पर फैक्ट्स के साथ चिपके रहने वाले लोग हैं। हम भी ह्यूमन हैं, हमारे भी अपने व्यूज होते हैं। हाँ, आपका वेस्टेड इंटरेस्ट जब उसके साथ इंक्लूड हो जाए, जैसा कि राडिया टेक्सास के ग्लेरिंग एग्जांपल्स हैं, वो ज़्यादा चिंताजनक बात है। और मुझे लगता है कि यह जो कंसर्न आपका है वो हम सकता है, कैसे उससे निजात पाएं, मुझे लगता है कि शायद इसका सोल्यूशन मैं भी निकालूँ। एक ही सेंटेंस में कहूँ कि બધા લોકો કે છાપામાં સાચું શું, તો છાપામાં ક્રિકેટનો સ્કોર સાચો આવે. You will find cricket score correct in newspaper, क्योंकि अगर मेरे अखबार में क्रिकेट का स्कोर गलत होता है ना तो सब बुकीज लड़ने आते हैं, क्योंकि वो क्रिकेट के स्कोर पे बुकीज लड़ाई करते हैं। सो मेरे अखबार की क्रेडिबिलिटी के लिए स्कोर जो है वो बिल्कुल परफेक्ट सही होना चाहिए, नहीं तो बुकीज आके लड़ाई करते हैं कि अखबार में स्कोर गलत है। दूसरा, अवसान नोंद जो आती है वो सही होती है, तारीख सही होती है, ऊपर कवर प्राइस सही होती है, बाकी सब अखबार की पॉलिसी के मुताबिक बदलता रहता है। I'd just like to make one point. We also need to consider the conditions in which our journalists work in India. We are not ready to pay more for news, okay? And India is one of the most dangerous countries for journalists to work. If you see the statistics worldwide, the statistics of journalists who have been attacked or who have lost their lives because of reporting on certain things. So that while we speak of the culture of dissent, and very rightly of knowing where opinions and facts come into place, we also have to applaud the conditions under which our journalists work, because those who take very strong stands very often have to pay very high prices for that. One last question. One last question, please. Before that, you know what, Suman, आपने जो बोला that everyone, there's a blurred line between columnist and regular reports. Today, with the world, this social media, in this world of social media, everyone has become a columnist because everyone has opinions at different platforms. हाँ, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जो भी पैनलिस्ट जवाब देना चाहें। पहले तो बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि हम एड्स के बीच में न्यूज देख रहे हैं। Quick question. बता दें, एड का चैनल है, उसके बीच में थोड़ी देर न्यूज आती है और उस न्यूज में एक चीज होता है डिस्कशन। अभी मैं भी बैठूंगा आगे एक डिस्कशन में, तो मैं आज तक ये नहीं समझ पाया, वो मुर्गी और अंडे जैसा हर डिस्कशन खत्म होता है, चाहे मैं किसी भी चैनल पे जाऊं और मेरे देश का हर बुद्धिजीवी, अच्छा वहाँ हम जैसे लोगों को पूछने का मौका भी नहीं मिलता जो ऑडियंस में बैठे, हमें सिर्फ देखना होता है। मैं हर बार कोशिश करता हूँ कि ये खत्म, कुछ पता चल जाए कि भैया इसका सोल्यूशन क्या निकला। जितना कंफ्यूज मैं शुरू किया था उससे ज्यादा कंफ्यूज होकर वो प्रोग्राम खत्म होता है। आज से वही उस दिन मेन खबर वही है, उस चैनल पर दूसरा आ जाता है, भाई वो भी एक स्टार एंकर है, उसने भी उसको शुरू किया, फिर ये कैसे खत्म होगा? भाई हम लोग किसी दिन किसी एक बहस का सॉल्यूशन पाएंगे क्या? बस ये जानना चाहता हूँ आप, क्योंकि आप लोगों ने इतना समय दिया जर्नलिज्म में, तो मुझे सिर्फ उसके बारे में इशारा करते हैं, वो दिन कभी आएगा क्या? Please, because she had raised her hand, please say the question. Let's wrap up. Sir, my question is, what will be the status of Indian media, especially television channels,
the way we have seen NDTV Ravish Kumar being banned for a day. My concern is that. पहली चीज आपने डिबेट की बात की, जो हल्ला गुल्ला होता है उसमें इन्फॉर्म करना, डिस्कशन लोगों को भूल जाए। दूसरा, उसके पहले आपने कहा कि डिस्कशन कब शुरू होता है और कब विज्ञापन शुरू हो जाता है पता ही नहीं, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये परसेप्शन का खेल है, क्योंकि आप देखिए इंडिया में आपको आइडिया भी होगा कितने चैनल हैं जो कि प्रॉफिट करते हैं, आप फिंगरटिप्स पे काउंट कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर चैनल के पास जो इतना अधिक कमर्शियल है कि उसके पास कंटेंट चलाने। मैं एक चैनल को हेट करता हूँ, मेरी हालत ये है कि 30 मिनट का जो आधे घंटे का चक होता है उसको भरने में मेरे पसीने छूट जाते हैं क्योंकि 2 मिनट का कमर्शियल। तो यह हालात जो है सभी चैनल्स के साथ। दूसरा, आपने कहा कि अच्छा डिस्कशन, आप माने या ना माने, लेकिन मैं तो खैर प्राइवेट सेक्टर में हूँ, लेकिन चूंकि पब्लिक के पैसे से कई सारे चैनल चलते हैं जिसमें कि दूरदर्शन भी है, राज्यसभा टीवी भी है, लोकसभा टीवी, काफ़ी इन्फॉर्म डिबेट होते हैं, लेकिन मैं कभी उसकी कोई चर्चा नहीं। हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हम उसको क्रिटिसाइज करें और फिर जो ये कहें कि साहब ये बहुत गलत हो रहा है। रवीश कुमार की आपने बात की, अगर आप सोशल मीडिया को देखें तो ये महसूस होगा कि शायद 99% लोग जो टेलीविजन देखते हैं वो रवीश कुमार का शो देखते हैं। सच्चाई जो है उससे बिल्कुल उलट। अगर हिंदी के चैनल, जो कि हिंदी के ही एक चैनल को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर 100 लोग देखते हैं तो उसमें 3 लोग जो है उस पूरे चैनल को देखते हैं, यह रेशियो है। तो ये परसेप्शन जो बिल्ड होते हैं वो भी एक बड़ा खतरा है। जहाँ तक आज़ादी सुरक्षित रही क्या नहीं, आप देखें कि इस सरकार ने भी आखिर उसको फिलहाल तो टाइम नहीं दिया, और जहाँ तक बैन का सवाल है उसके पहले भी पिछले 10 साल में ढेरों चैनल पर इस तरह के हमारे पर भी नोटिस है। ऐसा नहीं कि कोई एक समय की बात है, और कहीं ना कहीं आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा बड़ी जिम्मेदारी से कि जर्नलिज्म के बच्चे हैं, सबको ये लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई प्रोविजन है मीडिया के लिए अलग से, ऐसा कोई नहीं है। बड़े बड़े सीनियर जर्नलिस्ट लिखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो मीडिया के लिए इस देश के कॉमन मैन को जो हक हासिल है हमें भी वही हक हासिल है। अब देखिए ना, ये खराब परसेप्शन अपने मन में बना लेते हैं कि आप एक विशेषाधिकार हासिल कर लेते हैं, उसके नाते आप सेलिब्रिटी बन जाते हैं। अगर हम अपना बैलेंस बना के रखें, मुझे नहीं लगता कि इस देश में कोई दिक्कत आने वाली। बहुत बड़ी चीज़ें हमने देखी है, इमरजेंसी को गए हुए बहुत समय नहीं हो, मतलब हम लोगों का तो खैर मेरा जन्म उसके एक साथ पहले हुआ था, अभी भी उस जनरेशन है। रघुवीर भाई ने तो खैर क्या हो, तो डरने की आवश्यकता नहीं, चिंता की। धन्यवाद ब्रजेश। आई एम अफ्रेड विल हैव टू एंड हियर। सरकार ने बैन लगाया लेकिन उन्हें बैन को मौकूफ करना पड़ा, पोस्टपोन करना पड़ा, उन्होंने खत्म नहीं कराया इस बैन को। Have faith in democracy, that's our biggest strength, and we'll continue to try to. Thank you. Thank you so much, our panelists. And thank you, ladies and gentlemen. Thank you so much to our esteemed panelists for taking us into the maze of media. On behalf of Team AILF, I request Mr. Rohit Nahgar to present all our esteemed panelists with a memento as a token of love and gratitude. Thank you so much. Please, let's have a big round of applause for all of our panelists once again. And with that, we call to an end of the second session of Ahmedabad International Literature Festival first day. And now, I invite upon the stage my fellow anchor Simran Chhabra to conduct the coming sessions. And with that, this is Nivit Desai signing off for the day. Have a great day ahead. Thank you so much.